just buy it. Nexus Prime Purifier. Let's search it on Google or on Amazon. Let's Amazon and open Amazon.in. Type your product name, Nexus Purifier. Then scroll down. That's our product here. I purchased in here. I already purchased here. So I purchased an item on 4th October, and it has the function of RO+UV UFTDS and alkaline 18 liter bullet booster from 100 GPD RO membrane, ABS plastic food grade material. Installation service available all over India. Call Nexus Pure Company on this number or this number between 11:30 to 5:30 p.m. Taking about his reviews. His reviews is good, and also I purchased it and I use it. It's a good product. So let's take a look in my home after the installation of my Nexus Pure Opal 18 Glacier Alkaline RO+UV UFTDS or alkaline purifier, and all these accessories are inside this tank. You can see this. Don't worry about it. All these accessories you can see here are inside your tank. If you first buy online, then you can call this number. Don't get install yourself. First time you have got 400 rupees for installation, so that's a nominal. So we have take a look in our components, what type of components we are getting. One water purifier, one pre-ultra filter, one spun candle, one inlet valve and one tap, one spinner, 2 elbows and pipe. So let's have check out. तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्सस का वीडियो है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका प्री फिल्टर है। यहाँ पर आपका इनलेट आउटलेट यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं वाटर इनलेट और आउटलेट। और यहाँ पर आप ब्रांडिंग देख सकते हैं, नेक्सस प्योर की है। ये आपका प्री फिल्टर हर 4 महीने में या 6 महीने में, अगर आपका वाटर अगर थोड़ा गंदा हो जाता है तो उसमें आप इसको साफ कर सकते हैं। तो ये आपका देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी वाटर लेवल देख सकते हैं। और जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर वाटर अभी यहाँ तक भरा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका कनेक्शन है। तो मैं आपको इसका प्रोसीजर बता देता हूँ। जब भी आप पहले इंस्टॉलेशन करेंगे तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर का जो भी स्टोरेज टैंक के अंदर जो भी एक्सेसरीज, ये आपका बॉटल और यहाँ पर आपका पाइप जो भी उसको फिट कर लेना है। यहाँ पर एक
वाटर वो रहता है, वो प्लंजर टाइप का, वो आपका अगर पानी पूरा भर जाता है लेवल तक तो वो आपका सर्किट को ब्रेक करके बैटरी को बंद कर देता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप वो 5 यहाँ पर मोटर लेवल स्टेजेस है फिल्ट्रेशन के, RO+UV, TDS और अल्कलाइन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपको क्या करना है, प्री फिल्टर को आपको सेट करना है, वहाँ से एक पाइप लेना है जो आपको वाटर इनलेट में जाएगा, वाटर इनलेट में। सेकंड पाइप वहाँ से निकलेगा और वहाँ से निकल के आपका ये वाला पाइप ये आएगा आपका वेस्टेज में। वेस्टेज के बाद आपका जो यहाँ इसका सेकंड पाइप है, ये आपका टैप वाटर से जुड़ा रहेगा। टैप वाटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टी शेप का यहाँ पर आपको दिया है टैप वाटर के लिए। तो यहाँ से आप टैप वाटर के लिए ले सकते हैं पानी। आपको ऐसे मेन कनेक्शन से नल से आपको जोड़ के लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आप अभी ऑन है, ये ऑफ कर सकते हैं, ये ऑन। तो यहाँ से आपको जाएगा प्री फिल्टर, देन आपका प्यूरीफायर में जाएगा। तो इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये आपका स्टार्ट हो गया प्री फिल्टर, देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका पानी आपका देख सकते हैं लेवल आपका चालू हो गया है फिल्टर, इसमें साउंड आपका सुन सकते हैं। ये आपका मोशन वाला जो पंप है वहाँ से आपको पानी पूरा आपका फिल्टर में जाता है। ये 18 लीटर का है, देखिए यहाँ पर पानी आना शुरू हो गया और यहाँ से आपको वेस्टेज जो पानी है वो निकलना शुरू हो गया। अगर आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर ये पानी निकलना बंद हो जाता है तो आपका फिल्ट्रेशन जाम हो गया, आपको सर्विस की ज़रूरत है। और जैसे ही मैं इसको बंद करता हूँ ये आपका पानी निकलना बंद हो जाएगा, देखिए आप। तो ये है आप नेक्सस का प्यूरीफायर। तो मेरे से 6 महीने यूज़ कर लिया है, ये अभी बहुत अच्छी तरह चल रहा है। तो मैं चाहूँगा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे आप जाके ले सकते हैं अमेज़ोन के थ्रू। इंस्टॉलेशन का चार्ज 500 रुपीज़ आपको लगता है, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।